हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, टुडे आई एम शेयरिंग समथिंग वेरी स्पेशल विद यू। बेसिकली आज हम फ्रिज मैग्नेट बनाने वाले हैं MDF बोर्ड पे। सो हैंड पेंटेड मंडला आर्ट पीस दैट सेज आई लव माय फैमिली। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डेकोरेटिव फ्रिज मैग्नेट है, created with colorful mandala patterns that adds warmth and love to any home. So let's talk about the process. I started by cleaning the MDF round base thoroughly to ensure a smooth surface. Then I painted it with the black acrylic paint. Black creates a perfect contrast for bright mandala colors and makes the design pop. बेसिकली क्या होता है कि ब्लैक कलर के ऊपर जो है सारे कलर्स बहुत अच्छे से वाइब्रेंट और एस्थेटिक लुक देते हैं और ब्लैक हर कलर के साथ कंट्रास्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है। सो once the base was dry, I lightly marked the center and drew simple pencil guidelines. These help maintain symmetry while painting the mandala pattern. सो बेसिकली मैंने सेंटर में यहाँ पे पेंसिल से रफली लिख लिया है आई लव माई फैमिली। एंड दोनों साइड्स पे हम सेम डिज़ाइन रखने वाले हैं, दोनों सेमी सर्कल्स पे। सो आई हैव स्टार्टेड विद कलर ब्लू। सो नाउ कम्स द फन पार्ट, बिल्डिंग द mandala यूजिंग डॉट्स। आई यूज डॉटिंग टूल्स एंड फाइन brushes to place each dot carefully. I have chosen a vibrant rainbow color palette, orange, blue, green and white, each dot placed with focus and patience. This process is very meditative and satisfying. आपको भी ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। This mandala design, this mandala pattern is so amazing and dot mandala really gives you a soothing and very mind relaxing So our main pattern in the center has completed. After this pattern I will add detailed dots around the edges and filled gaps with small highlights. These finishing touches really bring out the beauty and balance of the design. I made this beautiful art piece in my live session. So if you want to join and watch the entire live session, I will attach the link in the description. You can join and watch it because it has already uploaded on my channel. Basically, if you have noticed, this color palette is also related to our Indian national flag, orange, white, green and blue. Actually I have noticed when I completed this pattern only. So जैसे कि अभी यहाँ पे मेन पैटर्न हमारा हो चुका था, उसके बाद अभी जितना भी रेस्ट ऑफ द स्पेस है यहाँ पे मैं ब्रश के साथ ही स्विशेस इसमें लगाने वाली हूँ। और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि जितना ज़्यादा पैटर्न करोगे ब्रश के स्विशेस जो होते हैं वो उतने ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। ठीक है, एज जैसे कि मैंने सेंटर में अभी पेंसिल से रफली लिखा है, उसको हम पेंट से लेटर ऑन भी लिखेंगे। ठीक है, विद द वाइट कलर, वाइट एक्रेलिक पेंट और विद द हेल्प ऑफ ब्रश। So let's complete the swooshes. Then I will write the I love my family quote in between. Second thing guys, if you have not subscribed me yet, please subscribe my channel and also like, share and comment on my video. Also share it with your friends, and yes, if you want to order these beautiful fridge magnets, keychains, handmade crafts, so you can let me know in the comments. Also I will share the details with you. The prices are so nominal, so you can buy easily, or you can also buy from my Instagram also. I put these white dots on the corners or on the edges to give it in a complete look. After that
we will complete the coat also. So now in the center of the piece I will write the quote "I love my family" using white acrylic paint, as I told you earlier. The heart symbol adds a lovely emotional touch to the design. So love के लिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे लव को डिनोट करने के लिए हार्ट का सिंबल बनाया. So it is making it a perfect gift or personal decor piece. So you can gift it to someone special also. Let's complete it. After that, you know that I have shared a lot of time that for sealing the artwork I use the varnish after the 24 hours of completion my artwork, because varnish adds a glossy finish and protects the artwork, making it durable and long lasting. So guys, I hope you have enjoyed the process of this beautiful mandala magnet come to life. If you like the video, please give it a thumbs up, leave a comment, and don't forget to subscribe for more handmade art content. Thank you so much for watching. See you in the next video. I hope you have enjoyed the entire process. Take care. Bye bye.